गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक। अ न्यू डे हैज़ स्टार्टेड और आज हम लोग आई एम विद असीम और हम लोग ट्रेन लेने वाले हैं टुवर्ड्स एला और स्टेशन पे पहुंच चुके हैं। ऐसा है कुछ स्टेशन। वी हैव ट्रेन एट 8:40 और लेट्स गेट इन। This is our train. I guess this one is 48, right? Yeah. This one's 48. गाइस अभी फाइनली पहुंच चुके हैं नुवारा एलिया और प्लान था एला जाने का, बट एला जो है वो कैंसिल हो गया। अब एला जो है प्रॉब्ली टुमारो या डे आफ्टर टुमारो वी विल गो, बट अभी हम नुवारा एलिया हैं और ट्रेन की जर्नी भी बहुत ही अमेजिंग थी और काफ़ी मज़ा आया। तो अभी अपनी जगह पहुंच चुके हैं, होटल में चेक इन करेंगे होटल में और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या प्लान है।
ऐसा है कुछ होटल, प्रियंका और असीम साथ में। सो ऐसा है कुछ व्यू। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाउ आर यू? गुड गुड, थैंक यू सो मच। या ऑलराइट गाइस, तो होटल में चेक इन कर दिया है और नुवारा एलिया जहाँ पे अभी हम लोग हैं, जो होटल और हॉस्टल का नाम है उसका नाम है बिलीव इन। काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी है और ये लोग काफ़ी हेल्पफुल हैं, काफ़ी सुंदर है। तो ऐसा है कुछ रूम, बेड है, एक एसी है और ये ड्रेसिंग टेबल है, ये है और बाथरूम है यहाँ पे, और ओवरऑल द प्रॉपर्टी काफ़ी अच्छी है। ऑलराइट, तो अब हम तैयार होके निकल चुके हैं टुवर्ड्स हमारा जो जहाँ पे मैं रहता हूँ उसी का जो ओनर है उसने ही हमें अपने पास कार है और वही इज़ टेकिंग अस अराउंड द सिटी टूर, जिसमें कि टी गार्डन है सबसे पहले और उसके बाद यू विल मूव ऑन टू अदर प्लेसेस। सो लेट्स सी। और नज़ारा काफ़ी अच्छा है यहाँ का। ऐसा है कुछ। That's the highest mountain. Yeah. That's called Pedro Mountain, 2,524 meters from the sea level. Okay, so that's the highest mountain in Sri Lanka. Pedro Mountain. Pedro Mountain. Pedro Mountain. That's the golf ground in Nuwara area. Inside Victoria Park. And this is the Victoria Park. Right. This land, no wall. Here we are at the टी फैक्ट्री और यहाँ पे अब हम एक छोटा सा टूर लेंगे टी फैक्ट्री का एंड देखेंगे। ये श्रीलंका की सेकंड ओल्डेस्ट टी फैक्ट्री है और चाय कैसे मैन्युफैक्चर होती है विल सी हियर। हम लोग टी फैक्ट्री में अब छोटा सा टूर लेंगे टी फैक्ट्री का। Welcome to our tea factory. My name is Mandy. I'm going to explain you the tea process. In Sri Lanka, we have three kinds of tea. Yeah. It is white tea, green tea, and black tea. Okay. But from in this factory, we produce black tea and white tea. Okay. Green tea we produce another factory, another area. It is belongs to this company. Okay. So the company name is Damro. It was started since 1928. Okay. But factory was started 1849. We have got around the plantation 1,200 acres of the tea garden, and all of the Sri Lanka we have 54,000 acres. Okay. This is one of the largest tea factories, and we have got here 1,000 workers. Within the 1,000 workers, 700 ladies we are having, 300 men we are having. Okay. First, I'm going to tell you the black tea process. Black tea, the first process, we got the leaves from the tea garden. Normally, tea leaves are top leaf, but it doesn't matter big or smaller. It is like a 2 leaves together or 3 leaves together. In the plantation, ladies only do the plucking process. So we have 700 ladies. So each lady picks about per day 20 kilos by hand. Oh, that's huge. She works about 8 hours. During the 8 hours, she must pluck 20 kilos of the leaves. Then after the plucking, they collect the leaves by this conveyor belt, leave it here, make it dry. Okay. The corner, it is a big fan, so there goes under the leaves. Oh. So that only the leaves are get dryness. Normal days, 14 hours to dry. Rainy time, 18 hours to dry. Okay. But every 2 hours or 3 hours, we mix the leaves up and down by hand. So Okay. right now, you've kept them to dry. Yeah. Okay. We leave it here 2 tons of the fresh leaves. After the dry, we are getting 1 ton. So Oh. 50% it is the evening tea. Okay. And also green tea, black tea, white tea, those are come from same plant. But
So it's the same plant but different process, so different products at the end. Different process, different cut. Okay. It means the white tea we take only the bud. Oh, the bud only. Yeah. Green tea we take out the baby leaves. Black tea doesn't matter together. Oh. So one plant, different parts of the leaves makes different process. So later I will explain the white and green tea process. Now we will see the next process, crushing. Okay. Having a silver color small shooter. Through that only the ladies are shoot the leaves from upstairs. Come by the shooter with the rolling machine. Crushing about 20 minutes, 250 kilos. Then the leaves are transferred to those machineries. Those we call roll breakers. It is break the leaves and shake the leaves in different sizes of the leaves. Because black tea, different sizes makes different taste. Different people having a different taste. Then the leaves are collecting by basket, leaving it on the table here. This is the next process we call fermentation. Fermentation only 3 hours process. It is on the table. So during the 3 hours, tea leaves color, smell, tea taste and tea strength changing by oxidation. It's a natural oxygen process. Green color leaves turn into brown color. But if we take the green tea, we don't do the fermentation. Oh. Black tea, green tea between those two. Black tea with fermenting, green tea without fermenting. Okay. So green tea is still lighter, black tea is still stronger because oxygen process. And white tea only totally different process. For the white tea, we don't need the machinery process. We need only sun dry. They take the buds, leave it on the sun dry process. So white tea during rainy days. Yes, a special climate only we can produce the white tea. In this factory, white tea capacity per month 1 or 2 kilos. Then the leaves are goes to the next process to dry the leaves to stop the fermentation. Then the dry machine. Make it dry about 20 minutes. So 20 minutes the brown color particles turn into black color. So we call black tea. 20 minutes we take the temperature here 125 Celsius because we don't need here gas or electricity, we need only firewood. Oh. Natural firewood only makes the leaves nice flavor, they taste. They're using a special wood, it is from the rubber tree, rubber wood. Rubber wood. Yeah, because it burns long time like 6 weeks. Okay. Then it goes to the last process to separate the quality. Process, and we collect the leaves, we shoot the grading machines. These are like shaking. Through that only they collect the English breakfast tea, English afternoon tea, big leaves, or smaller leaves like that. Different sizes, different tastes. The smaller the particles are, stronger the tea. Bigger the particles are, lighter the tea. According to that, we do the separation. But smaller or bigger, both are the quality-wise same. Sizes only makes the difference. But there's no difference in the taste. Different taste. Different All taste. this is strong. Oh, okay. So different sizes makes different color, different taste. Okay. But quality same. Same. Then only after separating, we have a special tea taster. They are tasting the tea. They recognize the tea quality, tea strength, tea color, all the things. Then they say this is okay to pack only. They do the bulk packaging like that. Then once a week it goes to Colombo tea auction. There is a tea buyers, Lipton, Delma, Ceylon, Tasna. They buy from the tea auction. They do on label, on packaging, send it all over the world. Okay. But Lipton or Delma, they don't produce the tea, they are the just buyers. Here we are at the next stop. This is एक यहाँ पे व्यू पॉइंट है और बस यहाँ से कुछ ऐसा व्यू देखने आए हैं हम लोग. तो ऐसा कुछ है और सामने भी वो एक वाटरफॉल है, वहाँ पे जाएंगे और व्यू काफ़ी अच्छा है. यहाँ से सामने लेक है. आई एम नॉट श्योर विच दैट लेक इज़ बट काफ़ी अमेजिंग है व्यू यहाँ से. तो अभी हल्का फुल्का हाई करके हम लोग ऊपर जा रहे हैं एंड वहाँ से वाटरफॉल का व्यू कैसा है देखते हैं. हमारे साथ है नीचे जनता. देयर इज असीम. Coming. How you are liking it?
Very good. Yeah. Very tiring too. Very tiring, yeah. And here we are. ऐसा है कुछ वाटरफॉल जहाँ पे हम लोग 15 मिनट की हाइक करके आए हैं. पास्कल एंड असीम दे वेंट फॉर स्विमिंग. ये देखो क्या जबरदस्त वाटरफॉल है और ये भाई साहब पहुँच गए स्विमिंग करने. क्या तगड़ा व्यू है. एंड देयर शी इज प्रियंका. ये पैनोरामा शॉट्स ले रही है अपने. एंड द व्यू इज अमेजिंग. बहुत बढ़िया, शानदार. That's all for the day guys. The trip ended और काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी अच्छा रहा. अभी हम जा रहे हैं वापस हॉस्टल और कल का प्लान कुछ है सीता टेम्पल जाने का और एक नेशनल पार्क है वो देखना. तो वही प्लान है. अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब एंड सी यू गाइस टुमारो. टिल देन बाय बाय.